Hello dear students, in last lecture exercise 6.1 question number 14 sub question number 2 is completed. Now next sub question number 3. Okay, dictionary order find out for the neural. Okay, neural. So first of all, alphabet arrangement. Okay, alphabetically order of the letter of word neural. Alphabetical order of all the letter of the word neural will be first A, I, L and R. Okay, alphabetically arrangement. Now next sentence, arrangement with A in the first place will be 1P1 remaining 4 letters, so 4P4. Write down arrangement with A in the first place will be 1P1 into 4P4, 24 ways. Now next, I in the first place. Next, arrangement with I in the first place will be, so I1P1 and remaining 4 letters 4P4, ways. Now next, L in the first place. जब तक हमारा N नहीं आता तब तक हम इसी तरह से अरेंजमेंट करते रहेंगे. Okay, arrangement with L in the first place will be 1P1 into 4P4, 24 ways. Now next, in our first letter N, find out N in the first place, alphabetically rearrangement A in the second place. So write down arrangement with N in the first place
and A in the second place will be A one time and one time, remaining 3 liters. So 3p3 1p1 into 1p1 into 3p3, total 6v. Now next, I in the second place. Okay, so alphabetically third place, rearrangement A. So write down arrangement with N in the first place, I in the second place, and A in the third place. Will be 3 times 1p1 and remaining 2 liters 2p2, total 2 is. Now next, in alphabetically, L in the third place. So arrangement with N in the first place, I in the second place, and L in the third place. Will be 3 times 1p1 and remaining 2 later 2p2, total 2 ways. Now next, in third letter R, alphabetically fourth A and fifth L, यानी कि हमारा वर्ड्स हो गया नीरल. So arrangement with N in the first place, I in the second place, R in the third place, A in the fourth place, and L in the fifth place. Will be
5 times 1p1 is equal to 1v. Now last, dictionary order of the word neural. Okay, dictionary order of the word neural. Is equal to, okay, 24 24 24, 3 times 24 plus 1 times 6 plus 1 2, 2 times 2 and 1 times 1. Using calcium, 24 plus 24 plus 24 plus 6 plus 2 plus 2 plus 1, 83. ओके, neural का डिक्शनरी ऑर्डर वर्ड्स neural क्या होगा? 83. Here completed question number 3. Now next, in fourth letter, Suman. Okay. So write down first of all alphabetically order of alphabetical order of all letters of the word, all letters of the word Suman will be, okay, alphabetical arrangement. First A, M, N, S, U. Okay, alphabetically arrangement होगा. Now first in the first place, arrangement with A in the first place will be A one time, remaining 4 letter 4 time, 1p1 into 4p4, 24 way. Now next
M in the first place, so will be same 1p1 into 4p4. Arrangement with M in the first place will be 1p1 into 4p4, 24 ways. Now next, N in the first place arrangement with N in the first place will be 1p1 rest of 4 later arrangement for 4p4, 24 ways. Now next, S in the first place alphabetically written, A in the second place. Arrangement with S in the first place and A in the second place will be S 1 times 1p1, A 1 time 1p1, rest of 3 later 3 places 3p3, total 6 way. Now next, in second place M, so write down arrangement with S in the first place and M in the second place will be 1p1 into 1p1, rest of 3 later 3p3, it means 6 way. Now next, N in the second place, so write down next arrangement with S in the first place and N in the second place will be 1p1 into 1p1, remaining 3 letters 3p3, 6 way. Now next, in second place U, alphabetically arranged in third place A, so write down arrangement with
as in the first place, U in the second place, and A in the third place, will be 3 times 1p1 and remaining 2 letters 2p2, 2 ways. Now next, alphabetically arrange third letter M, fourth A and fifth N, यानी कि सुमन वर्ड सब मिल जाएगा. अरेंजमेंट विथ as in the first place, U in the second place, M in the third place, A in the fourth place, and N in the fifth place. Will be 5 times 1p1 is equal to 1 way. And last, dictionary order of the word suman. Of the word suman is equal to 24, 24, 24. 3 times 24 plus 1, 2, 3. 3 times 6 1 time 2, 1 time 1. So find out 24 plus 24 plus 24 plus 6 plus 6 plus 6 plus 2 plus 1. So 93rd words of the dictionary word of the suman. Okay, here completed for the question number 14.
Now next, in question number 15. How many arrangement of the letter of the word slok can made such that all the vowels are together? Okay. S H L O K A. All the vowels are together. All vowels एक साथ आनी चाहिए. A E I O U. ओके. A E I O U. दो ही वॉल्स है, दोनों एक साथ आनी चाहिए. टोटल 1 2 3 4 5 6 लेटर, उसमें दो वॉल्स, रिमेनिंग कंटेनेंट दोनों एक साथ आने चाहिए. तो कहाँ पे आ सकते हैं? सपोज हम S H L एंड K दोनों साथ कहाँ पे आ सकते हैं? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक साथ आने चाहिए. कंबाइंड दोनों का एक यूनिट लेंगे तभी दोनों वर्ड्स क्या आएंगे? एक साथ आएंगे. तो उनके लिए प्लेस कितनी होगी? तो 4 लेटर है, 4 के बीच में या फर्स्ट और लास्ट. देखिए टोटल 5 प्लेस हुई उनके लिए. 1 2 3 4 5 कहीं पे भी आ सकते हैं. देखिए 5 प्लेस है. ओके. यूनिट हमारा तो कंबाइंड यूनिट है, दोनों इंटरचेंज भी हो सकते हैं. फर्स्ट है वो सेकंड, सेकंड है वो फर्स्ट भी हो सकता है. यानी हमने क्या किया? 4 कॉन्टिनेंट के 4 एंड 2 वर्ड्स का कंबाइंड 1 यूनिट, यानी टोटल 5 यूनिट का 5 पे 5 कर देंगे और दोनों का इंटरचेंज. ओके. देखो इस तरह से हम राइट करेंगे. हम टोटल परम्यूटेशन 1 2 3 4 कॉन्टिनेंट एंड 2 वर्ड्स का कंबाइंड 1 यूनिट, यानी कि 5 भी 5 हो गया. दोनों वर्ड्स इंटरचेंज हो सकते हैं. 2p2, so 5 factorial into 2 factorial, 120 into 2, total outcomes 240. Okay. Now next, in question number 16, last for the exercise 6.1. 7 speakers A, B, C, D, E, F and G are invited to deliver a speech in program A, B, C, D, E, F and G. Speaker have to deliver speech one after the other. One by one सभी speech दे रहे हैं. In how many ways speeches of 7 speakers can be arranged if the speaker B has to deliver his speech immediately after the speaker A? क्या बोला? If the speaker B has to deliver his speech immediately after the speaker A. यानी स्पीकर B कब स्पीच दे रहे हैं? स्पीकर A स्पीच दे के बैठेंगे, तुरंत कौन खड़ा होगा? स्पीकर B. लेकिन स्पीकर बी स्पीच देंगे उसके बाद स्पीकर ए खड़ा होगा, ऐसा बोला नहीं है. क्या बोला है? ए के बाद तुरंत ही बी स्पीच दे दें, यानी ए एंड बी का हम कंबाइंड 1 यूनिट ले लेंगे एंड रिमेनिंग 5 जो स्पीकर होंगे 5 प्लस 1 6. यहाँ पे इंटरचेंज इज़ नॉट पॉसिबल. फर्स्ट ए स्पीच दे रहा है उसके बाद ही बी दे रहा है. यानी जो इंटरचेंज हमने यहाँ पे वॉइस में लिया था वो इंटरचेंज यहाँ पे पॉसिबल नहीं कि फर्स्ट बी स्पीच दे उसके बाद ए, वो पॉसिबल है नहीं. क्योंकि इफ द स्पीकर बी हैज़ डिलीवर स्पीच इमीजिएटली आफ्टर द स्पीकर ए, यानी कि स्पीकर ए स्पीच देगा उसके बाद ही बी देगा. तो आउटकम किस तरह से हो गई? टोटल
permutation is equal to 6p6। इसका हमने कंबाइंड 1 यूनिट ले लिया, 2 3 4 5 6 हो गए 6p6। ये दोनों इंटरचेंज नहीं हो गए, यानी कि इंटू 1p1 इंटू 1p1। फर्स्ट ए स्पीड देगा, उसके बाद ही बी देगा। सो 1p1 इंटू 1p1, 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, 7 20 इंटू 1 इंटू 1, टोटल 720 ways. So here completed question number 16. Here completed for the permutation first topic. Now next मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में हमने क्या किया, सिर्फ अरेंजमेंट। अब जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे। देखो, वी हैव स्टडी परम्यूटेशन विच गिव्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स। नाउ वी शैल थिंक अबाउट द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट सम ऑफ द थिंग फ्रॉम गिवन डिस्टिंक्ट थिंग। अब क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, जो दिया है उसमें से थोड़े बहुत। ओके, सम ऑफ द थिंग। फॉर एग्जाम्पल, तान्या हैज़ 3 फ्रेंड, रुतवा, कथन एंड कीर्ति। रुतवा, कथन, कीर्ति, 3 फ्रेंड्स है तान्या को। नाउ इफ दिस 3 फ्रेंड्स आर टू बी अरेंज इन 2 places, देन इट कैन बी डन इन 3p2। उसको अरेंज करना हो मैं 2 फ्रेंड को, तो 3p2, 3 में से 2 को अरेंज करेंगे, यानी कि टोटल 6 वेज एज अंडर। देखो, रुतवा कथन हो सकता है ऑप्शन, रुतवा कीर्ति, कथन रुतवा, कथन कीर्ति, कीर्ति रुतवा और कीर्ति कथन। ओके, फर्स्ट और सेकंड प्लेस 6। बट नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन। टाइप्स ऑफ सिलेक्शन में क्या चेंजेस होगा। तो तान्या वेंट टू इन्वाइट ओनली 2 फ्रेंड आउट ऑफ द अबाउट 3 फ्रेंड्स फॉर अ फंक्शन एट हर होम। हाउ मेनी ऑप्शन डज तान्या हैव टू इन्वाइट 2 फ्रेंड आउट ऑफ 3? विल तान्या इन्वाइट रुतवा एंड कीर्ति? रुतवा एंड कीर्ति और कीर्ति एंड रुतवा सिलेक्शन तो हो गया, और रुतवा एंड कथन और कथन एंड कीर्ति। Thus only 3 different ways can arise, which are shown in the following table. Selection ways: first selection Rutva and Kathan, second Rutva and Kirti, and third Kathan and Kirti. उसमें अरेंजमेंट था कि फर्स्ट प्लेस पे कथन हो, सेकंड प्लेस पे रुतवा हो, फर्स्ट प्लेस पे रुतवा, सेकंड प्लेस पे कथन हो, यानी डबल वेज हो जाते थे। यहाँ पे सिलेक्शन है, 2 को ही बुलाना है, फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ है नहीं, 2 सिलेक्ट ही करना है। वो कथन है, रुतवा हो सके, रुतवा और कथन दोनों सेम ही ऑप्शन है। इट शुड बी नोटेड हियर दैट द ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट इन परम्यूटेशन। ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट इन द परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। सो रुतवा एंड कथन एंड रुतवा आर डिफरेंट विथ रेफरेंस टू परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में दोनों डिफरेंट है, क्योंकि फर्स्ट रुतवा सेकेंड कथन, फर्स्ट कथन सेकेंड रुतवा, तो 2 वेज हो गए विथ रेफरेंस टू परम्यूटेशन। वेयर एज द ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन सिलेक्शन। सिलेक्शन में ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट 2 तो 2 एक साथ ही आ जाएंगे सिलेक्शन में, उसमें ऑर्डर नहीं है। दैट इज वेदर रुतवा एंड कथन एंड और कथन एंड रुतवा कम टू तान्याज होम, इट मीन्स द सेम। ओके, कथन एंड रुतवा बोलेंगे या रुतवा एंड कथन, दोनों क्या है, सेम ही सिलेक्शन। द सिलेक्शन ऑफ 2 फ्रेंड आउट ऑफ 3 फ्रेंड कैन बी डन इन 3 वेज, जो हमने राइट किए। ईच ऑफ दिस ऑप्शन ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, और जो ईच एंड एवरी ऑप्शन जो सिलेक्शन करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ सच कॉम्बिनेशन इज डिनोटेड बाय 3c2। Thus it can be said that 3c2 is equal to 3. In the general, the total number of combination of selecting are
in bracket less than or equal to n things out of n thing will be NCR. इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय NCR. जिस तरह से हमने NPR का डिनोट किया उसी तरह से यहाँ पे NCR का भी डिनोट कर सकते हैं. द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टिंग R थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग इज NCR. ओके, जो हम n थिंग्स में से R थिंग्स डिफरेंट जो सिलेक्ट कर देंगे उसे हम क्या बोलेंगे NCR. नाउ let us see how the value of NCR is obtained. The total combination of selecting R things out of n distinct things is NCR. In each type of selection, R things are involved. R things among themselves can be arranged in RPR is equal to R factorial ways. Thus we get R factorial permutation corresponding to each combination, and NCR combination gives NCR into R factorial permutation. But as we have seen earlier, total number of permutation of R things out of n things is NPR. Here single another formula given for the NCR. NCR is equal to n factorial divided by R factorial in bracket n minus R factorial. एक कॉम्बिनेशन की मेन फॉर्मूला है. NCR is equal to n factorial divided by R factorial in bracket n minus R factorial. ओके, सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट और एक फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में हम राइट करवाएंगे. ओके.